जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान सैयद अल शाह आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मौजूद हूँ जी आज यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी में, चूँकि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने एक सेमिनार अरेंज किया है पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, जिसमें से स्पीकर डॉक्टर अनोश खान, प्रोफेसर ऑफ जेंडर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और इसके अलावा डॉक्टर माजिद साहब जो कि स्पेशलिटी है सोशियोलॉजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर जमाल खटक साहब मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पॉइंट्स लेंगे कि अबाउट सेमिनार उनका क्या कहना है। सो स्टे विद अस। This socio-cultural setup basically introduces women to a vicious circle of problems where one aspect of the life is affected, its impacts are manifested in the other aspect of the life. So all of this, for instance, they are denied their basic right to education. So education is associated with employability of a person. So if women are uneducated, they are more likely to be unemployed, and if they are unemployed, they are more likely to be economically dependent on the men of society, which in result limits their autonomy, freedom, and decision-making power. So this is basically a vicious circle of problem which does not allow women to grow to their full potential. Well, let me share a short story with you people. While presenting on the same topic in another place, a participant asked me an intriguing question. He said it's not about inequality and access to resources. It's basically about the natural imbalance in the competence level possessed by men and women. In simple word, he meant that since men are more intellectual, more intelligent, and more competent, that's why they perform better than women. So I asked him that, do you have any reasonable justification for thinking like this? He said, I firmly believe in this, and if you don't agree with me, just answer my one question. He said, just tell me how many Shakespeares are there in women and how many Einsteins are there in women. I said, we have to think about it, whether it's a cause or it's an effect. Since we do not provide them equal resources, equal privileges, it's equivalent to say that we do not allow them to grow to their full potential, to prove someone like Einstein or Shakespeare. So that's all for this introductory background. Thank you for listening to me. तो अगर हम ये कहें कि मर्दों में इस तरह नहीं है, औरतों में इस तरह नहीं है, I think that will perhaps reinforce some of these roles that we assign to people in our society. Instead of thinking about woman or man as two separate beings, they are. Why don't we look at it as two sides of the same humanity? These are perhaps cultural or social constructions. क्या ये होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? I don't know. But I know one thing, कि domestic violence नहीं होना चाहिए. I know one thing, that violence, not just domestic, violence in general नहीं होना चाहिए. Nothing on the face of this earth justifies violence committed by one human against another. चाहे कोई भी वजह हो, उसको justify नहीं किया जा सकता. So these are some of the things for which perhaps most of us sitting here, I will say most of us sitting here, क्योंकि कुछ लोगों के पास सारे सवालों के सारे जवाब हैं, मेरे पास तो नहीं है. मैं तो अब भी ढूंढ रहा हूं कि सच क्या है मेरे बारे में, मेरे मुआशरे के बारे में, हमारे लोगों के बारे में. Who are we? What do we want from life? Have I taken a step in that direction? I don't think anyone sitting here wants to have the kind of poverty that we have in our country. We want prosperity. We want, economic opportunities to be given to all of us. We want peace. But how far am I contributing to elimination or alleviation of poverty? How far am I contributing to the peace that I so badly want? That is the idea that we have started these seminars or these talks. That is there any profession nowadays in Pakistan which we think is not the right profession for women? They should do something else. NGOs, okay.
You mean like a TV artist, actor? Right, yes, there is definitely. Well, for women, there are a lot. What are professions for men that are not acceptable? If we have a male tailor, just a minute, or if we have a male cook, but they are not the ones who are either cooking for their family or who are stitching for their family. They are the ones who are earning money. So as long as you are earning money, it's okay. You have world famous brands who are owned by men, and they are all clothing brands. You have great cooks. Look at almost all our big hotel chains in Pakistan. Their head cooks are men. I haven't come across a female head cook in any of these 5-star hotels, the few that we have in Pakistan. So this is interesting. This is something to think about. All right, this is something to think about. जेंडर इक्वलिटी बेसिकली है ये कि जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं ये अ काइंड ऑफ रूरल एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी जो है लोग पढ़े लिखे नहीं है. तो यहाँ पे होता क्या है, लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते, और लड़कों और लड़कियों में फ़र्क कर रहे हैं और दोनों को इक्वल राइट्स नहीं दे रहे. तो बेसिकली ये है यही कि दोनों को इक्वल राइट्स देना चाहिए, तालीम के लिहाज से भी, हर चीज़ के लिहाज से भी. तो बेसिकली ये है यही. तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर जमाल खटक साहब का, और आपके जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब जो हैं, उन दोनों के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक सेमिनार की सीरीज़ शुरू की है, जो कि जिसमें सबसे पहले ही उन्होंने जेंडर के हवाले से ही बात की है या सिनफियत के हवाले से. और मुझे आपसे स्टूडेंट से डायरेक्टली बात करके बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा रिस्पांस था और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था कि वो जवाब दे रहे थे. तो अगर आप परसेप्शन पूछते हैं तो ओवरऑल तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और मैं चाहूँगी कि इस किस्म के और सेमिनार्स ज़रूर किए जाएँ. इसके अलावा काइंडली मुझे ये भी बता दें कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो परसेप्शन है, काइंडली उस पर भी रिव्यू कर लें. ठीक है जी. जेंडर इक्वालिटी के बारे में या सिनफी बराबरी जिसे कहते हैं उर्दू में, उसके बारे में देखें, मैं सिर्फ यहाँ पे जेंडर की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे बात बराबरी की हो रही है. ठीक है, तो बराबरी तो मेरा ख्याल में हर माशरे में, हर सतह में बहुत ज़रूरी है. और जब हम जेंडर की या सिनफ की बात करने लग जाते हैं, उसमें तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये चीज़ हमें घरों में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक दफ़ा घर में बराबरी करते हैं बच्चों के बीच में, तो मेरा ख्याल में वो उनको एक ऐसा मजबूत इंसान बना देते हैं, चाहे वो बेटे हों चाहे वो बेटियां हों, कि वो आगे जाके माशरे में अच्छे शहरी साबित हों, और ना सिर्फ ख़ुद अच्छे शहरी साबित हों लेकिन औरों के हक़ में भी ज़्यादा अच्छे इंसान साबित हों, जहाँ पे उन्हें ख़ुद जब डिसीजन करनी पड़े, उन्हें ख़ुद जब जस्टिस प्रैक्टिस करना पड़े तो वो कर सकें. जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था. आप सब लोगों ने डॉक्टर अनोस साहिबा की, इसके अलावा डॉक्टर माजिद साहब की, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर जमाल खटक साहब की बातें जो है वो सुनी होंगी, उनसे काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन ली होगी, काफ़ी जो है वो नॉलेज गेन की होगी. सो आज के प्रोग्राम का टाइम हमारे साथ पूरा हो चुका है. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. सो मुझे अपने कैमरा मैन हसन जैद के साथ इजाज़त दीजिए जी. अल्लाह हाफिज़.